Assalamu alaikum. Advocate Ameer Hamza here with you. Today we will discuss sale tax return lecture. Today is lecture 3. We will discuss. Before this, we will lecture discuss 1 and 2. File sale tax return. Every person registered under Sale Tax Act 1990 or the Federal Excise Act 2005 is required to file a sale tax return. A sale tax return is the taxpayer document of declaration through which taxpayer not only furnishes the detail of transaction during a tax period but also deposit his sale tax liability on the return from the taxpayer declaration for a particular tax period and respective input tax and output tax and prescribed rate of sale tax in case input tax exceeds output tax. The amount of refund claim or excess input tax is also declared in the return. A registered person shall file a single return from all the possible sectors that the registered person is operating in. Due date for the single return for the sector would be the due date applicable to his major activity in terms of sale tax or federal excise duty payable. Where a sale tax return is not filed within a period of 6 months after the due date, the same shall be filed only after approval of the Commissioner Inland Revenue having the appropriate jurisdiction. सेल टैक्स रिटर्न फाइल करें. सेल टैक्स एक्ट 1990 या फेडरल एक्साइज टैक्स 2005 के तहत रजिस्टर्ड हर फर्द को सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है. सेल टैक्स रिटर्न टैक्स दहिंदगान के डिक्लेरेशन की दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए टैक्स दहिंदा न सिर्फ टैक्स की मुद्दत के दौरान लेन देन की तफसीलात फराहम करता है बल्कि अपने सेल टैक्स की जिम्मेदारी भी जमा करता है. रिटर्न फॉर्म पर टैक्स दहिंदान मखसूस टैक्स की मुद्दत और मुतलका इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का ऐलान करता है. सेल टैक्स की मुकर्ररा शर्ह पर इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से ज़्यादा होने की सूरत में दावा की गई रकम की वापसी इजाफी इनपुट टैक्स का भी रिटर्न में ऐलान किया जाता है. एक रजिस्टर्ड शख्स इन तमाम मुमकिना शुबों के लिए एक ही रिटर्न फाइल करेगा जिसमें रजिस्टर्ड शख्स काम कर रहा है. सेक्टर्स के लिए वाहिद रिटर्न की मुकर्ररा तारीख सेल टैक्स या काबिल अदायगी फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिहाज से इनकी बड़ी सरगर्मी पर लागू होने वाली मुकर्ररा तारीख होगी. जहाँ मुकर्ररा तारीख के बाद 6 माह की मुद्दत के अंदर सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है तो इससे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की मंजूरी के बाद ही फाइल किया जाएगा जिसके बाद मुनासिब दायरा इख्तियार हो. कैटेगरीज ऑफ सेल टैक्स रिटर्न. For different categories of taxpayers, monthly, quarterly, or annual return may be filed on prescribed format as follows. Monthly return. Under the standard procedure, a registered person is required to file monthly return next C on 10th and payment on 15th and return by the 18th day of the month following the period in which the supplies were made in the
designated branches of National Bank of Pakistan. In case of certain categories as mentioned below, procedure has been devised to file return on monthly and quarterly basis. Quarterly return, the taxpayer filing exclusively in the category of CNG required to file the return on quarterly basis. Annual return, a manufacturer is to file annual sale tax return for a financial year by the 13th this September of the following financial year. Final return. If a person apply for deregistration, the person shall before such deregistration furnish a final return to the appropriate commissioner having jurisdiction in at such time as directed by the appropriate commissioner. सेल टैक्स रिटर्न के ज़मरे टैक्स दहिंदारान के मुख्तलिफ ज़मरों के लिए माहाना, समाही या सालाना गोशवारों को दर्ज झैल फॉर्मेट पर जमा किया जा सकता है। माहाना मियारी तरीक़ाकार के तहत एक रजिस्टर्ड शख्स तारीख को 10 को माहाना रिटर्न ज़मीनिया अदायगी 15 तारीख को और सप्लाई की मुद्दत के बाद माह की 18 दिन तक नेशनल बैंक की नामज़दा ब्रांचों में वापसी की सूरत में होती है। कुछ ज़मरों की सूरत में जैसा कि ज़ैल में ज़िक्र किया गया है, माहाना समाही बुनियादों पर रिटर्न फाइल करने का तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया। समाही वापसी सीएनजी के ज़मरे में आने वाले टैक्स दहिंदगान को समाही बुनियादों पर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। सालाना वापसी एक कारखानादार को अगले माह की 30 सितंबर तक माली साल के लिए सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। हतमी वापसी अगर कोई शख्स डी रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देता है तो वह शख्स इस तरह की डी रजिस्ट्रेशन से पहले मुनासिब कमिश्नर के दायरा अख्तियार के हामिल मुनासिब कमिश्नर को हतमी वापसी पेश करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न is available for all registered person। सेल टैक्स रिटर्न के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सेल टैक्स रिटर्न के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सहूलत तमाम रजिस्टर्ड अफराद के लिए दस्तयाब है। रिवाइज सेल टैक्स रिटर्न ए रजिस्टर्ड पर्सन may file a revised return within 120 days of the filing of return to correct any omission or wrong declaration made therein, subject to approval of the Inland Revenue having appropriate jurisdiction। नज़रसानी शुदा सेल टैक्स रिटर्न एक रजिस्टर्ड शख्स रिटर्न फाइल करने के 120 दिनों के अंदर नज़रसानी शुदा रिटर्न फाइल कर सकता है ताकि इसमें की गई किसी कोताही या गलत ऐलान को दुरुस्त किया जा सके। मुनासिब दायरा अख्तियार रखने वाले कमीशन इनलैंड रेवेन्यू की मंजूरी से मशरू होता है। Now it's end. We will discuss the coming some topics in the next lecture. Please share and subscribe to that lecture for the motivation purpose. No end.